तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको बता रही हूँ JPSC के लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल्ड सिलेबस एनालाइज। तो अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज मैं आपको बताऊंगी JPSC के पेपर 5 का पूरा डिटेल्ड सिलेबस एनालाइज, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि यह पेपर आपका कुल मिलाकर 200 अंकों का होता है, जिसे आपको 3 घंटों में पूरा करना होता है। इस पेपर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे द क्वेश्चन पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट शैल कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस। सेक्शन 1 shall be compulsory. This section shall contain 20 objective questions each of 2 marks। यानी कि यह पेपर आपका कुल मिलाकर 5 सेक्शंस का होता है, जिनमें से फर्स्ट सेक्शन आपका कंपल्सरी होता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए होते हैं। The 20 objective questions of this section shall be drawn from the entire syllabus of the paper। यानी कि जो आपकी ये 20 प्रश्न होते हैं सेक्शन पहले में से, ये आपका पूरा इंटायर सिलेबस कवर करते हैं और जो 2 मार्क्स के होते हैं। Of which 6 questions will be drawn from group A, B, from C group, of which 6 questions will be drawn from group A, 6 from group B, 4 from group C and 4 from group D of the syllabus। यानी कि यहाँ आपको पूरा कैटेगराइजेशन बताया गया है कि कौन से सिलेबस में से, कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। Section 2nd, 3rd, 4th and 5th of the question paper shall have 2 optional questions each, drawn respectively from group A, B, C and D of the syllabus, of which the candidates will be required to answer 1 question from each group। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों आपका जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो आपके सिलेबस बेस्ड ही होते हैं, इसलिए आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। Thus altogether the candidates will be required to answer 1 objective type compulsory question carrying 40 marks and 4 optional questions। यानी कि आपको एक कंपल्सरी क्वेश्चन करना होगा जो 40 मार्क्स का होगा और 4 ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे जो हर एक क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स का होगा। The optional question shall be answered in traditional descriptive form and requiring long answers। यानी कि ऑप्शनल का मतलब है आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्टिव वे में एक ब्रीफ आंसर आपको लिखना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए यानी कि बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है नेशनल इनकम, विच इंक्लूड्स एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नेशनल इनकम एंड मेथड्स ऑफ इट्स कैलकुलेशन। एग्जाम्पल GDP, GNP, NDP, NNP, GSDP, NSDP, DDP at constant and current prices at factor cost etc। वहीं इन्फ्लेशन में कॉन्सेप्ट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, मॉनेटरी, फिस्कल एंड डायरेक्ट मेजर्स। डेमोग्राफिक फीचर्स में वर्क फोर्स कंपोजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड विद स्पेशल रेफरेंस टू सेंसस ऑफ 2011, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, agricultural growth in Indian production and productivity, causes of low productivity and measures taken by government to improve agricultural production, green revolution, evergreen revolution and rainbow revolution, WTO and agriculture, marketing and pricing of agriculture inputs and outputs के अलावा भी आपसे कई सारे टॉपिक्स आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड चार्जेस, पब्लिक फाइनेंस, nature, importance and scope of public finance, public revenue, principles and types of taxation, direct, indirect, progressive and proportional concepts of VAT, public expenditure, theories of public expenditure, causes of growth of public expenditure and its impact on economy, internal and external borrowings, budget, which includes principles of budgeting, types of budgeting, performances based, zero-based FRMD, fiscal policy, which includes concept and the role of fiscal policy in achieving employment, stability and economic development,
center-state fiscal relationship, which includes role of Finance Commission, finance aspects of the 73rd and the 74th constitutional amendments, structure of Indian monetary and banking system in India. नेक्स्टली इसमें आपके 2 पॉइंट्स कवर किए गए हैं, जैसे कंपोजिशन एंड डायरेक्शंस ऑफ इंडियाज ट्रेड, बैलेंस एंड पेमेंट प्रॉब्लम। अब बारी आती है ग्रुप बी की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग एंड मेजरमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अंडर डेवलपमेंट, indicators of development like HDI, GDI, GEM, India's HDI progress, role of foreign capital and technology in growth of economy. Sustainable development, which includes concept and indicators of sustainable development, economic, social and environmental sustainability, concept of green GDP, strategy and policy for sustainable development in India, meaning of inclusive growth and development policies and strategy during 11th and the 12th 5-year plan, development status and issues pertaining to socially and the economically marginalized section like STs, SCs, religious minorities, backward caste and women, schemes launched for their development by central state government including TSP, SCSPs and minorities. Then poverty and unemployment, which includes measurements and the trends, identification of BPL families, HPI, multidimensional Indian poverty index. फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में आता है आपका ट्रेंड्स इन फूड प्रोडक्शन and consumption in India, problem of food security, problems and issues of storage, procurement, distribution, import and export, government policies, schemes and programs such as PDS, ICDS and midday meal, etc. Governmental policies for food and nutritional security, planning strategy, which includes the objective and strategy of Indian 5-year plans, functions and role of the NDC, Planning Commission, decentralized planning, which includes meaning and importance, PRIS and decentralized planning, major initiatives on India. आखिरी ग्रुप जो आता है हमारा वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, जो इजी के साथ साथ वास्ट भी है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको जोड़े जाते हैं, जैसे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच इंक्लूड्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, रैशनल एंड नीड फॉर रिफॉर्म, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, their role and impact on Indian economy. Financial and the banking sector reforms, economic reforms and rural banking impact on the rural credit, sources and problems of the rural credit, institutional credits, SHG, microfinance, NABARD, RRBs, scheduled commercial banks, rural cooperative financial inclusion, globalization of Indian economy, which includes its positive and negative impact on the different sectors, issues of FDI and fill in India, agriculture sector's reform and its impact on growth, issues of subsidies and public investment on agriculture reform and the agrarian crisis. तो दोस्तों ये सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वहीं अगला जो टॉपिक आता है इसमें लास्ट वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द इंडिया विच इंक्लूड्स मेजर चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द SMEs, role of public sector enterprises in India's industrialization in post-reform period, disinvestment and privatization of the public enterprises. Group D की बात की जाए तो इसमें इकोनॉमी ऑफ झारखंड which includes features, issues, challenges and strategies की बात की जाती है। तो इसमें दोस्तों आपका आता है economic growth and the structure of Jharkhand economy, sectoral composition, growth in SDI and growth in SDP and per capita NSDP in last decades, agriculture and industrial growth in Jharkhand, demographic features of Jharkhand which include population growth, sex ratio, density, literacy, composition of workforce, rural urban composition, etc., with special reference to census of 2001 and 2011, inter-district variation, status of poverty, unemployment, food security, malnutrition, education and health indicators in Jharkhand, major initiatives, issues of agriculture and rural development, major programs and schemes, poverty alleviation program, PURA, Bharat Nirman, Manrega, PMGSY, SGSY,
LAY, NRLM, etc. and food security schemes. And last second point will be land, forest and environmental issues in Jharkhand, which includes land reforms and the agrarian relation, tribal land alienation, development-induced displacement of people, its impact and policy initiatives, forest issues and implementation of FRA, environmental degradation and the state policy to deal with 5-year plans in Jharkhand strategy and achievement in the 10th and the 11th plan, TSP and SCSP, public finance trends in the Jharkhand, industrial policy in Jharkhand and industrial development। तो दोस्तों यह तो था पेपर 5 का पूरा डिटेल सिलेबस एनालाइज। अगर आप भी इस पर्टिकुलर टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं या पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं और साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।